Good morning, all of you. Okay, so for B.Ed entrance ପାଇଁ we will be discussing today motion. So B.Ed रे around in physics रे आसे around 20 marks ठीक अछि physics रे and questions सेते बेसी tough न थाए average to above average level रे ही questions थाए दीटा question to तीनटा question भितर टिके high level रे question आसे ठीक अछि but if the concept is clear जानि छथि how to solve it then you can solve it easily. ठीक है सेमती तो कौन सी केवल थियोरिटिकल केवल न्यूमेरिकल से भले ना इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थियोरी एंड न्यूमेरिकल्स मिसिकी ही आसे ठीक है. सो मोशन रू अराउंड यू विल गेट समथिंग 2 मार्क 4 मार्क्स 4 मार्क ठीक है ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स आई कैन से जे मोशन रू आसे ठीक है. सो मोशन टॉपिक रे लेट अस सी Rajesh slide blank slide दरकार blank blank नहीं एटी लिख दे. ओके ठीक है. सो मोशन रो इफ यू सी अराउंड ठीक है. सो मोशन रो अराउंड 4 to 6 मार्क्स 4 मार्क्स ऑन एन एवरेज ना 6 मार्क जाए ठीक है. सो देखिए आम किसी कॉन्सेप्ट्स एंड किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पाई जोटा कि मोशन रो B.Ed रे पचारे जाई पारे. ओके ठीक है. सो फर्स्ट देखिए मोशन क्या कहते ओके मोशन क्या कहते मोशन केते बेले कहबा जते बेले गोटे बॉडी देखंतु ये गोटे बॉडी हैला ठीक अछि दिस इज ए बॉडी जदि ये बॉडी निजर पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज करछि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक अछि देन वी कॉल इट एज मोशन ठीक अछि. सो कंटिन्यूअसली बॉडी चेंजेस ठीक अछि कंटिन्यूअसली बॉडी changes ठीक है its position with respect to ठीक है time and observer ठीक है and observer ठीक है. so then सेते बेला में ताको को कोन that it the body is in motion ठीक है. मोशन देखंतु दी प्रकार रो जनरली क्लासिफाई करले हमें ठीक है. गोटे हैला यूनिफॉर्म आ गोटे होची नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है. आ गोटे है नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है. यूनिफॉर्म मोशन केते कहबा धरतु गोटे बॉडी 2 मीटर डिस्टेंस कवर कला ठीक है टाइम 2 सेकेंड्स पुणी 2 मीटर इन 2 सेकेंड्स पुणी 2 मीटर इन 2 सेकेंड्स. सो बॉडी कौन कर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर इन इक्वल टाइम इंटरवल. सो दैट इज वाई वी कॉल इट एज ए यूनिफॉर्म मोशन ठीक है. एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन केते कह जते बेले बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर कला बा अनइक्वल टाइम इंटरवल रे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कला दीटा क्राइटेरिया भितर जदि जेकोसी गोटे क्राइटेरिया फेल हो ताहले कौन कह देन वी कैन से दैट द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक अच्छे. ओके तापर क्वेश्चन पचारि देखो ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सो वेक्टर कौन स्केलार कौन आम देखा ठीक अच्छे. देखो फिजिक्स रे जहाँ भी आम मेजर करिपरिबा ओके. सो जहाँ भी anything we can measure ठीक है physical. so physical quantity anything we can measure is called physical quantity ठीक है. anything that we can measure is called physical quantity. volume mass length time okay all these things we can measure called physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी दी प्रकार गोटे है स्केलर आ गोटे है वेक्टर ओके. वन इज स्केलर एंड अनदर इज वेक्टर. स्केलर हूँ कौन. सो दीज आर एक्चुअली द फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड ठीक है. दैट डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड ठीक है ओके एंड नॉट डायरेक्शन जमीती कि आम गोटे बॉडी मास मेजर करवा ठीक है. आज बाहर टेम्परेचर केते मेजर करवा ओके
बुझिपारे सो ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड एज ना मेजर करवा जे टाइम केते सो ऑल दिस थिंग्स आर योर स्केलर ओके मास ओके टेम्परेचर एंड टाइम सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर वेक्टर का कहते जी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उपरे डिपेंड करे बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इट इज कॉल्ड एज ए वेक्टर ठीक अच्छे सो जमती कि कहीपरि मु वेलोसिटी राजे से लिभे हेनी कि थोड़े टिके लिखिले ये लिभुनी क्लीन मारला पड़ो ये जस्ट सो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ठीक अच्छे जमती यार एग्जांपल मैं लिख पारि वेलोसिटी ओके एक्सीलरेशन ओके डिस्प्लेसमेंट ओके फोर्स मोमेंटम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो एमती बहुत जिनस अच्छी फिजिकल क्वांटिटीज जोड़ा कि स्केलर भी एंड वेक्टर्स ऑल्सो ठीक है सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी देखो स्पीड को आम केमती लिखती स्पीड हूँ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन ठीक है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी टोटल बाय टोटल टाइम टेकन ये है स्पीड सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी कहीं डिस्टेंस हूँ कौन द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस ठीक अच्छे ओके सो दैट इज वाई दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी तो ये हेनी डिस्टेंस आम देखिले डिस्टेंस हूँ कौन एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी ठीक अच्छे एंड डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी ठीक अच्छे केबे भी डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन केबे भी कहबेनी जे इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स नो सी इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट ठीक अच्छे ऑब्जेक्ट इनिशियल आउ फाइनल पोजीशन उपरे डिपेंड करुच्ची जे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी जमती कि मोटे सर्कुलर पाथ नेली बॉडी ए पॉइंट ओ रु स्टार्ट कला पुणी आसिक ये ओ रे पहुँची गला सो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम सो ताले कौन कह द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज जीरो इन दिस केस ठीक अच्छे बट जदि गोटे बॉडी धरतु ये पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी ठीक अच्छे आ गोटे पॉइंट नेले डी बॉडी ए रु सी गला सी टू बी आसला बी टू डी आसला ताले डिस्प्लेसमेंट केते हला डिस्प्लेसमेंट इज ओनली ए टू डी ठीक अच्छे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी टू फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी ठीक अच्छे एंड टाइम हूँ कौन टाइम इज स्केलर टाइम केवल आम मैग्नीट्यूड संगे एक्सप्रेस करूँ ठीक अच्छे 10 PM 11 PM ओके 12 AM लाइक दिस ठीक अच्छे सो से बोली टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी सो ओनली वेक्टर क्वांटिटी वी कैन सी इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट हियर ओके आई होप कॉन्सेप्ट जहाँ रिलेटेड या संगे दैट वी हैव अंडरस्टूड ठीक अच्छे सो डिस्प्लेसमेंट सो नेक्स्ट चेंज द सो नेक्स्ट देखो बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज ठीक अच्छे देखो यूनिफॉर्म मोशन आम देखते यूनिफॉर्म मोशन मीन्स व्हाट यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल डिस्टेंस और यस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ठीक अच्छे जदि गोटे बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर इक्वल टाइम इंटरवल देन वी कैन से व्हाट द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन नाउ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हूँ कौन सेम थिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स ठीक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी हूँ कौन देखो वेलोसिटी आम केत कहूँ स्पीड हूँ कौन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन सो वेलोसिटी हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बाय टाइम टेकन ठीक अच्छे डिस्प्लेसमेंट कौन आम डिस्कस कले
सिमिलरली यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कौन कहीं लिख पारि इक्वल डिस्प्लेसमेंट ठीक अच्छे इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल ठीक अच्छे ओके equal displacement in equal time interval then I can call the velocity to be uniform velocity ठीक अच्छे so it has zero acceleration constant acceleration decreasing acceleration ना increasing acceleration so कोटा हवा that we will see ठीक अच्छे now देखो तो equal displacement in equal time interval ठीक अच्छे uniform velocity अर्थ कौन equal displacement in equal time interval जदि velocity is constant केमिति देखो तो पॉइंट ए बी सी एंड डी ठीक अच्छे 2 मीटर कवर कला इन 2 सेकेंड्स ओके और बैक एमती लिखुच्छे 2 मीटर इन से 1 सेकेंड इजी हम आहरी ओके सो लाइक दिस ए सो 2 मीटर इट इज कवरिंग इन 1 सेकेंड पुणी 2 मीटर 1 सेकेंड पुणी 2 मीटर इन 1 सेकेंड सो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट ये 2 मीटर इन 1 सेकेंड 2 मीटर 1 सेकेंड 2 मीटर 1 सेकेंड सो डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर पर सेकेंड तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी रे जाउची ना एक्सेलरेशन को हम केमती लिखंती हाउ डू वी डिफाइन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम ठीक है एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी ठीक है सो इट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम ओके ताले चेंज इन वेलोसिटी केते एठी तो 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी यस ओके एठी भी 2 मीटर पर सेकंड एठी भी 2 मीटर पर सेकंड तो सबुठी वेलोसिटी कौन कांस्टेंट अच्छी ताले चेंज इन वेलोसिटी केते हबो जदि वेलोसिटी कांस्टेंट सबुठी चेंज इन वेलोसिटी केते हबो 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मींस चेंज इन टाइम द आंसर केते आसेला acceleration is 0 so that is why if a body is in uniform velocity the acceleration of the body will be equal to 0 ठीक अच्छे constant acceleration हबनी ठीक अच्छे डिक्रीजिंग नहीं कि इंक्रीजिंग नहीं ठीक अच्छे बिकज जब एक्सेलरेशन आसीगला ता माने वेलोसिटी चेंज हो गला जब वेलोसिटी चेंज हो गला दैट मीन्स इट इज नो मोर ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी बुझिपारे क्या वेलोसिटी चेंज हो गला नो मोर ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट विल बिकम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ठीक अच्छे ओके अच्छा so next देखो if the velocity time graph of a body is straight line parallel to time axis then the motion is ठीक अच्छे ग्राफ रो गोटे क्वेश्चन ठीक अच्छे ग्राफ रो भी क्वेश्चन आसे ठीक अच्छे देखो बहुत सिंपल वे सॉल्व करिया वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ देखो आम ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कही सो आम नॉर्मली एक्स एक्सिस कौन नियंते मैथमेटिक्स रे जानिथिबे समस्ते इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ताको आम एक्स रे नियंती एंड द डिपेंडेंट क्वांटिटी नॉर्मली वी टेक ऑन वाई एक्सिस ठीक अच्छे सो दैट मीन्स इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हूँ कौन टाइम बिकॉज वेलोसिटी स्पीड एक्सेलरेशन कहा रेस्पेक्ट रे चेंज होते टाइम रो रेस्पेक्ट रे चेंज होती ओके सो दैट इज वाई टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हियर एंड योर स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ओके दे आर डिपेंडेंट क्वांटिटी सो दिस इज टाइम एंड दिस इज velocity the velocity and this is time okay se kon koichi question re velocity time graph of a body is a straight line okay parallel to time axis so this is a straight line parallel to time axis okay then the motion is देखो जदि टाइम इंक्रीज हो चलती एक्स एक्सिस रे 0 2 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स 6 सेकेंड्स 8 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स किंतु एठी जो वेलोसिटी अच्छी ए वेलोसिटीटा कांस्टेंट अच्छी ना नहीं वेलोसिटी कांस्टेंट अच्छी ओके बुझिपारे ओके कहीं ना गोटे ही पैरेलल लाइन जाइए एट एवरी पॉइंट 2 सेकेंड के वेलोसिटी सेम हियर धरते ये वेलोसिटी मुझे लिखुची 6 मीटर पर सेकेंड ठीक अच्छे देन 4 सेकेंड के सेम 6 रे भी 6 सो इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी सो जदि कांस्टेंट वेलोसिटी जदि कांस्टेंट रोची ताहले चेंज इन वेलोसिटी केते हबो डेल्टा v 0 ताहले एक्सेलरेशन केते हबो डेल्टा v बाय डेल्टा t सो इट इज आल्सो 0 से पचार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के नो इट इज नॉट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहीं एक्सेलरेशन जो आसीगला सब बेले से कौन आसो वेलोसिटी रे किसी चेंज देखा बट ये वेलोसिटी चेंज तो 0 ओके देन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना नॉन यूनिफॉर्म भी एक्सेलरेशन नुहे यूनिफॉर्म मोशन और इट इज एट रेस्ट देखो ये वेलोसिटी तो 0 ना ना कहीं लाइन इज पैरेलल टू
एक्स एक्सिस जदि ऊपर किसी लाइन न था केवल मु कौन कही था वाई एक्सिस माने जदि केवल ओरिजिन रे ही बॉडी था ताहले एठी कौन होता था वेलोसिटी जीरो होता था ओके किंतु वेलोसिटी जीरो हेले कौन होता बॉडी इज इन रेस्ट कहि पार था किंतु हियर यू सी दैट इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन वाई चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो चेंज इन वेलोसिटी जीरो माने बॉडी इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी माने कौन केमी जाउची बॉडी बॉडी रो वेलोसिटी पूरा कांस्टेंट रहला एठी सो दैट इज व्हाई it is the body is in uniform motion which part the body is in uniform motion because the velocity remains constant okay with change in time okay answer is option C so next देखो the slope of distance time graph gives okay slope of distance and time now distance कहाँ respect रे change होचे time respect रे तो independent quantity कौन है इठे time है dependent quantity कौन है distance है okay सेते बोली I am writing here time and here I am writing distance okay so slope of distance time graph धरंतु मैं इठे गोटे लाइन ड्रा कली so slope means what ये जो एंगल देखुं आम थीटा ठीक अच्छे जदि यार मुझे टेंजेंट वैल्यू नेबी माने tan थीटा जदि मुझे नौचे दैट इज कॉल्ड स्लोप मीन्स देखो खसड़ा ठीक अच्छे खसड़ा तो जिते बड़े आम खसती तो जिते जोर तुम खसब से अधिका स्लोप जिते धीरे धीरे तुम खसुच से कम स्लोप ठीक अच्छे ओके सो tan थीटा जदि मुझे लिखी tan थीटा हूँ कौन अपोजिट बाय बेस ये अपोजिट कौन देखा मत डिस्टेंस ठीक है सो या मुझे लिखिदेली कौन डिस्टेंस एंड बेस कौन अच्छी टाइम ओके सो डिस्टेंस बाय टाइम कार फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ यस सो डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ सो डिस्टेंस बाय टाइम हूँ कार फॉर्मूला स्पीड ओके सो दिस इज स्पीड देखो तो स्पीड इज इक्वल टू मुझे कौन लिखिपारि डिस्टेंस बाय टाइम किंतु ये देखो ना एक्सेलरेशन हम एक्सेलरेशन ये आसबनी एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो कौन चेंज इन वेलोसिटी बट ये कौन देखिए डिस्टेंस सो ये तो हेनी वेलोसिटी तो नहीं वेलोसिटी कहाँ से रिलेटेड वेलोसिटी इज रिलेटेड विथ देखो डिस्प्लेसमेंट ठीक अच्छे गोटे कंडीशन अच्छी मुझे कहबी ओके देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टेंस केते सेम है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेते सेम है व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन ठीक अच्छे ओके सो डिस्प्लेसमेंट is equal to distance when the body moves in a straight line ठीक अच्छे एंड जब बड़े बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करे से मोशन को आम कौन कहूँ रेक्टिलिनियर मोशन देखो स्ट्रेट लाइन माने केवल नुहे हॉरिजॉन्टल लाइक दिस आल्सो स्ट्रेट लाइन ये भी स्ट्रेट लाइन कह दिस इज आल्सो स्ट्रेट लाइन मीन्स द मोशन शुड बी इन एनी वन डायमेंशन ओके एक्स वाई और जेड ठीक अच्छे इट शुड नॉट बी ऑन ए प्लेन ठीक अच्छे ये है एक्स ये वाई धरत ये जेड एक्सिस ओके लाइक दिस सो हाउ विल यू राइट डाउन हियर देखो सो दिस इज व्हाट डिस्टेंस बाय टाइम से कहे स्लोप ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम सो एप्रोप्रिएट आंसर कौन हम जदि मु स्पीड इंटू टाइम कर आई विल गेट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो आसबनी ये ओके सो इन दिस केस जदि इफ द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स ठीक अच्छे ताहले मु कौन लिखी ये दिस इज डिस्टेंस बाय टाइम आसीगला या क्रॉस मल्टीप्लाई कली जदि स्पीड इंटू टाइम जदि ठीक अच्छे या कौन लिखिपारि इक्वल टू डिस्टेंस बुझिपारे देखो स्पीड है कौन डिस्टेंस बाय टाइम आसीगला बट जदि क्रॉस मल्टीप्लाई कली या सेम फॉर्मूला को एमती लिखिपारि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ठीक अच्छे देखो किसी पिला भावुवे जे जदि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जिते बॉडी स्ट्रेट लाइन जाऊँगी ताहले स्पीड ये वेलोसिटी हो येस इट इज ट्रू किंतु क्वेश्चन से कंडीशन देनी जे बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन और नॉट ठीक अच्छे जदि से कंडीशन था देन वी कैन कंसीडर इट टू बी वेलोसिटी ठीक अच्छे किंतु से जिनस ये किसी दिखाई केवल पचार स्लोप तो स्लोप आमको मिलला स्पीड जहाँ कि आम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिखिपर सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन सी ठीक अच्छे ओके तो डिस्प्लेसमेंट ये हेनी सो एग्जाम ऑलवेज
एमती ना जे डायरेक्ट सब बेले माने क्लीयर कट आंसर दे देथिबो ऑप्शन रे समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन फैक्ट इन फिजिक्स यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ठीक अछि ओके न्यूमेरिकल्स रे भी यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कहीं एक्जाक्ट कैलकुलेशन करिया पे जदी स्टार्ट कर देबे एग्जाम रे देन बहुत टाइम पड़ेबो ठीक अछि सो दैट इज व्हाई वी गो बाय मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशंस जोडे हमर ऑफलाइन क्लास रे हम पढो ठीक अछि ओके सो अप्रोक्सीमेशन कोन मु पढाई क्लास रे केमिति अप्रोक्सीमेट करिवे ओके यूनिट्स डिजिट केमिति यूज करेंगे बुझिपारे केमिति डिजिटल सम यूज करके आंसर बाहर करेंगे ठीक है सो ऑफलाइन क्लास रे ताको हमें सब डिस्कस करूँ इन डिटेल ठीक है केमिति कैलकुलेशन को बहुत जल्दी और शॉर्ट रे करेंगे फिजिक्स रो स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ओके ठीक है सो देखो तो नेक्स्ट देखो a body thrown vertically upward has zero velocity at highest point its acceleration at that point देखो ये गोटे सरफेस है ठीक है गोटे बॉडी को मुझे ऊपर थ्रो कली सो बॉडी धीरे धीरे कौन ऊपर जीव देखो ये गोटे बॉडी रही है मुझे ऊपर थ्रो कली ये गोटे पॉइंट पर कौन हो रही जाऊँगी रहीकि तलू को आस तो हाईएस्ट पॉइंट रे या वेलोसिटी केते है जीरो तो सिमिलरली गोटे बॉडी को बॉल को मुझे थ्रो कली जदि हाईएस्ट पॉइंट रे वेलोसिटी जीरो किंतु एई पॉइंट रे या ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगुच ना नहीं यस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगुच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होची कौन दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी अंडर फ्री फॉल मीन्स ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ओके ओनली gravitational force is acting on the body and no other force is acting on it ठीक अच्छे तो सेतबेले ग्रेविटेशनल फोर्स में बॉडी रो जो एक्सेलरेशन ताको कहते स्मॉल g बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सो आंसर होगा g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ठीक अच्छे ओके सो दिस इज सिंपल नेक्स्ट देखिए तो एमती भी क्वेश्चन आसे सो नेक्स्ट देखो ये दैट ए बॉडी कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस व्हेन इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इट रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट रिमेन्स इन रेस्ट बट नेवर ठीक अच्छे देखो डिस्टेंस ता अर्थ कौन सिंपल क्वेश्चन मीनिंग बॉडी कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस ओके दैट मीन्स देखो जदि गोटे बॉडी निज पॉइंट रू स्टार्ट कला ए रु बी गला पुणी बी टू ए आसीगला ए टू बी देन बी टू ए तामाने तार इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन तो सेम हो गला इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिस्प्लेसमेंट को आम एस लिखो वेक्टर क्वांटिटी बोली मुझे आरो देली ठीक अच्छे बट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो डिस्टेंस केते ही जीवो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी बुझिपारे सो मुझे कौन कहीपरि व्हेन इट रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट ओके ठीक अच्छे सो नेक्स्ट देखो ओके व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ओके देखो वेरी सिंपल व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ ऊपर डिपेंड करे एक्सेलरेशन इज व्हाट चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम तो वेलोसिटी और टाइम पर डिपेंड करे इट इज आस्किंग द क्वेश्चन जे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मीन्स विथ इक्वल टाइम इंटरवल रे इक्वल एक्सेलरेशन होची ठीक है इक्वल एक्सेलरेशन बॉडी रो से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टाइम इंटरवल 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड ठीक अच्छे बुझिपारे जमती आम डिस्कस करते लाइक दिस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जाऊे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ठीक है सो व्हिच ग्राफ तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड वेलोसिटी एंड टाइम सो या भितर वेलोसिटी एंड टाइम नेली टाइम इज इंडिपेंडेंट सो ये टी नेली एठी मु भी नेली ठीक अच्छे सो कौन कही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सो मीन्स स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग इन वीटी स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग इन एस टी ना ये हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रे वेलोसिटी मिले कर्व्ड लाइन जदि आसीगला मन रखते कर्व्ड आसीगले इट इज योर नॉन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन इन एस टी ग्राफ ना हॉरिजॉन्टल मीन्स डिस्प्लेसमेंट सेम वेरास चेंज इन टाइम सो डिस्प्लेसमेंट टाइम तो एमिति कौन दबा आमको वेलोसिटी तो ये एक्सेलरेशन विषय किसी ना ये भी एक्सेलरेशन विषय किसी कहबार नहीं बंचला ये दुईटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व आसीगले नॉन यूनिफॉर्म पचार सो इट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन एग्जाम एमती सीधा देखिए टिक मारिक आसवे ठीक अच्छे ओके सो
स्ट्रेट लाइन मुझे ड्र कली ओके सो यार स्लोप नहीं गली धरतु थीटा ताकि मुझे कौन लिखिपारि डेल्टा v बाय डेल्टा t व्हिच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन सो स्ट्रेट लाइन जाइए मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल रे द बॉडी एक्सेलरेशन इज इक्वल ठीक अच्छे ओके सो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रिचेस 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स फाइंड इट्स एक्सेलरेशन या पूर्व मुझे कहवाई चाहिए आवर लिनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन बा रेक्टिलिनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन ठीक अच्छे देखो सो एग्जाम रे तुम कम लगे टोटाल 4टा इक्वेशन अच्छे बट 4 नंबर जाना दरकार नहीं तुम दैट इज द एसएनएथ फॉर्मूला ठीक अच्छे सो दैट इज u by 2 प्लस योर 2n-1 ठीक है सो दरकार नहीं सर तुम ठीक है सर टीजीटी लेवल पे दरकार सो बीएड पे आमर 3टा इक्वेशन जाना बहुत इंपोर्टेंट ओके लिनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन ओके लिनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन लिनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन अर्थ मुझे 3टा इक्वेशन ये डिस्कस करी दोज 3 इक्वेशंस आर ओनली एप्लीकेबल इफ द बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन फर्स्ट कंडीशन सेकंड थिंग द बॉडी हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन ठीक अच्छे ओके सो लिनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखिदेवी दीज इक्वेशंस आर ओनली applicable when first point body moves on a straight line second body moves with constant acceleration ठीक अच्छे ये दुईटा पॉइंट साटिस्फाई कले ही वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन नॉल वी कैन नॉट ओके सो फर्स्ट इक्वेशन होची v इज इक्वल टू u प्लस at u होची कौन गोटे बॉडीर इनिशियल वेलोसिटी मीन्स धरतु बॉडी इनिशियली केते वेलोसिटी केते स्पीड रे जाउथिला एंड v इज फाइनल वेलोसिटी फाइनली बॉडीर वेलोसिटी केते हैला एंड a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम मीन्स केते टाइम बॉडी को लगुच से u टू v को जीवाई माने तार वेलोसिटी धरतु इनिशियली गोटे बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड रे जाउची केते टाइम ताको लागिला धरतु ता वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड रो 4 मीटर पर सेकेंड करिवा पे ओके ठीक है दैट इज आई एम टेकिंग अस टाइम देन b सेकेंड इक्वेशन होची s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड s जानछन समझते s कौन लिखे हम s इज डिस्प्लेसमेंट एवं आम टिके समय आगु डिस्कस कले बॉडीर डिस्प्लेसमेंट कहते ये डिस्टेंस नुहे ये डिस्प्लेसमेंट बट जो गोटे बॉडी स्ट्रेट लाइन रे जाउची सेतबेले आम कौन नबा डिस्टेंस कैन आल्सो बी टेकन एज डिस्प्लेसमेंट ठीक अच्छे देन लास्ट इक्वेशन देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as ठीक अच्छे फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ठीक अच्छे तो यही 3टा इक्वेशंस होचंदी पूरा गुरु मंत्र ठीक अच्छे ये 3टा इक्वेशंस को मन रखिले यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम एनी न्यूमेरिकल फ्रॉम मोशन इन 1D ओके ठीक अच्छे देखो कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रिचेस 20 मीटर पर सेकेंड देखो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अर्थ कौन इनिशियल केते वेलोसिटी थिला 0 थिला ठीक अच्छे इनिशियली कार इज एट रेस्ट वेलोसिटी 0 एंड रिचेस टू 20 मीटर पर सेकेंड माने फाइनल वेलोसिटी v केते 20 मीटर पर सेकेंड केते टाइम रे 0 टू 20 जो है किसी टाइम लगी थी ना रेस्ट अच्छी गाड़ी रेस्ट रू 20 मीटर पर सेकेंड गला केते टाइम 5 सेकेंड्स लगेगा ताले एक्सेलरेशन केते मु पचारछि आमे आ भीतर को इक्वेशन यूज कर परिबा देखंतो आमको कौन ये एस दिखाई कि डिस्प्लेसमेंट दिखाई कि डिस्प्लेसमेंट दिखाई केवल u दिखाई v दिखाई t दिखाई ताहले डेफिनेटली वी कैन नॉट यूज दिस टू इक्वेशंस yes or no because s is not given so what you have to use v is equal to u plus at and then we can get the answer so v is equal to u plus at so ये हला 20 ये हला 0 ये हला हमारा a ये हला into 5 ताले इठू a वैल्यू केते बाहरी हो दिस इज 20/5 काटी देले केते बाहरला 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है बिकॉज वेलोसिटी रे एसआई यूनिट होची कोन मीटर पर सेकंड टाइम रे सेकंड सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिजिक्स रे बी केयरफुल विथ यूनिट्स ठीक अच्छे एसआई यूनिट जानी दरकार ओके यूनिट्स जब क्लियर ना देन फाइनल आंसर भूल हो जाए बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग टू सेम यूनिट ठीक अच्छे ओके सो मोस्टली चेष्टा करेंगे सब बेले कीप ऑल द यूनिट्स ओके इन एसआई यूनिट्स ठीक अच्छे सो दिस इज ये टाइप रो गोटे
क्वेश्चन ए भाया गोटे क्वेश्चन आसीबो एंड नेक्स्ट देखंतु ए बाइक travels at 40 km per hour for 2 hours find the distance ओके 40 km per hour for 2 hours ठीक अच्छे या अर्थ कौन देखो बाइक के ट्रावेल कला 40 km per hour माने गोटे घंटा रे 1 आवर केते डिस्टेंस जाउची 40 km ठीक अच्छे 2 घंटा पाई सो 2 आवर्स हेले केते हबो 2 मल्टीप्लाई कर दो 40 into 2 ठीक अच्छे दिस इज इक्वल टू 80 km इट इज गोइंग टू ट्रावेल ठीक अच्छे सो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला वाइज लिखिबा देखंतु मोटा सीधा मोहर मोर हिसाब जमती करा जे गली तो देखंतु स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओके बाय टाइम ओके अंडरस्टूड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ओके ओरली तक हमें कहले सो स्पीड कैन बी रिटन एज हियर 40 km per hour and this is your distance ताले रहला टाइम इज 2 hours so just cross multiply it so it is 80 km per hour okay sorry क्रॉस मल्टीप्लाई कर देली 40 km per hour ठीक अच्छे इंटू 2 hours इज इक्वल टू डिस्टेंस सो इट आर कटि गला सो दिस इज इक्वल टू अगेन 80 km ठीक अच्छे ओके इधर यू कैन सॉल्व दिस ओरली ठीक अच्छे बाय यूजिंग एप्टीट्यूड ठीक अच्छे और यू कैन यूज द फॉर्मूला व्हिच एवर इज कन्वीनियंट टू यू ओके सो चेष्टा करिवे जते बेले क्वेश्चंस सॉल्व करछन फिजिक्स रे फर्स्ट यूज योर कॉमन सेंस ठीक अच्छे नॉलेज कम्स लेटर ओके कौन पढ़ी नॉलेज अप्लाई नॉलेज केमती अप्लाई करो दैट इज लेटर थिंग फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन पढ़ी आगे सॉल्व कर स्टार्ट करदेनि ठीक अच्छे भर जो आंसर आसला टिक करदे नॉट लाइक दैट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट इन फिजिक्स ठीक अच्छे एंड देन क्वेश्चन बुझिल पार्ट बाय पार्ट पढ़िल हल्का रफ्रे टे डायग्राम भाया कल ना जब इंटरप्रेट कर मेंटली ऑल्सो इट इज गुड ठीक अच्छे देन यू गो थ्रू द ऑप्शंस कौन दे ऑब्जर्व कर ऑप्शंस रे ठीक अच्छे क्वेश्चन पढ़िल ऑब्जर्व इन द ऑप्शंस यूनिट्स कौन देछि वैल्यू कौन देछि ठीक अच्छे कौन लिखाई ऑप्शंस रे यू ऑब्जर्व दैट प्रॉपर्ली बेस्ड ऑन द क्वेश्चन ठीक अच्छे एंड तापर यू यूज योर कॉमन सेंस जे भर कोटा न हो पारे ऑप्शन कारण 4टा ऑप्शन अच्छी तो यूज ऑप्शंस टू गेट द राइट आंसर कोटा न हो पारे जदि किसी एलिमिनेट हो गला काटी दियंतु आग ठीक अच्छे जदि एलिमिनेट होनी यू यूज योर नॉलेज टू सॉल्व बट फर्स्ट थिंग यू हैव टू यूज इज योर कॉमन सेंस इन एग्जाम ठीक अच्छे ओके जदि जानते ठीक अच्छे एक्सेलरेशन दिखाई ताले एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी एंड टाइम ही केवल रिलेशन आसवे डिस्टेंस स्पीड डिस्प्लेसमेंट टाइम ये सब किसी ना मत वेलोसिटी एंड टाइम ही दरकार तो जोट जोट अच्छी सब काटी दिंतु लास्ट जब गोटे ऑप्शन बचे जो वेलोसिटी एंड टाइम अच्छी दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू एक्सेलरेशन तेणी तुम क्वेश्चन बुझी था कि न बुझी था अंडरस्टूड ओके एक्सेलरेशन अच्छी जदि इट इज इक्वल ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज वेलोसिटी एंड टाइम ऊपर डिपेंड करिवो सिमिलरली वेलोसिटी जदि कही डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ऊपर डिपेंड करिवो तार स्पीड संगे किसी रिलेशन ही नहीं अंडरस्टूड ओके सो दैट वे यू हैव टू सी जो क्वेश्चन कौन देछि यूज योर कॉमन सेंस फर्स्ट एंड देन यू कम टू योर नॉलेज पार्ट ओके सो नेक्स्ट देखो ए बॉडी एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली देखो यूनिफॉर्मली जदि से दे न था वी विल एज्यूम इट टू बी यूनिफॉर्मली जदि न दे था क्वेश्चन रे एंड दबापाई एमती बाध्य बा आम एज्यूम करबा बाध्य बिकॉज लिनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन सेतेबेले यूज करा जाय परियो जतेबेले सेकंड कंडीशन हम कौन पढ़िले दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ओके सो देन सो एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम 5 मीटर पर seconds from 5 meter per second तामाने इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड अर्थ कौन इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड फॉर 4 सेकंड्स केते समय पर एक्सेलरेट कला फॉर t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स फाइंड द फाइनल वेलोसिटी सो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम जानछंती फर्स्ट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as so it कौन सी जगह डिस्प्लेसमेंट दिया ही नहीं so we cannot use these two equations we have to use finally what v is equal to u plus at okay so लगा दबा to get final velocity this is asked to us so v is equal to u plus at so v is equal to this is 5 plus 2 into 4 so v is 5 plus 8 so 5 plus 8 is 13 meter per second ठीक है 8 5 12 okay 8 5 13 so 13 meter per second so this is our final answer okay so बहुत पिला डरंती न्यूमेरिकल को
ओके सो देखो केमती न्यूमेरिकल एग्जाम रे ओके एग्जाम रे आसथिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मु नेछि प्लस सिमिलर टाइप रो मु नेछि प्लस आउ केते वेराइटीज रे पचारा जाई पारे क्वेश्चन को माने सेम कांसेप्ट रो आउ केते प्रकार पचारा जाई पारे जा बाहर को आउ किछि आसीबोनी ओके सो आसीबो तो ए वेराइटी रे आसीबो या बाहर को आउ किछि आसीबोनी ओके सो एठी देखंतु लाइक दिस second गोटे सेकंड बोर्ड हैंग हो गला हाँ पेन आसुनी ओके सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कार कवर्स 200 मीटर इन 10 seconds with uniform acceleration again देखो uniform acceleration starting from rest माने u value केते 0 so find the acceleration ए पचारछ हमको covers 200 मीटर in 10 seconds ठीक है so this is our कार केमी जाउची will take car moving in a straight line will assume the car moving in a straight line ठीक है नहले we cannot use what equations of motion so सेते displacement is 200 meter and time केते कोहिची 10 seconds we have to find a देखो एठी s देला t भी देला u रहला 0 of course and a रहला okay so can we find s is equal to एठी t देछि तो v is equal to u plus at करी होबनी काइना फाइनल वेलोसिटी जणा नै ठीक अछि so v is equal to u plus at ए इक्वेशन करी यूज करी होबनी because we don't know value of v s is equal to ut plus half at square then v square minus u square equal to 2as the final velocity jana nahi so we cannot use this we have to use this finally so s is equal to ut plus half at square so s dekhuntu u to 0 so this term is 0 so half into a into t square means 10 square kete 100 s value kete koichi 200 is a by 2 into 100 तो 0 0 कटि गला a value केते आसिला 4 meter per second square ठीक अछि this is the value of acceleration ठीक अछि okay so next देखंतु stone okay is dropped from a height of 45 meter देखंतु height रहिला ये हला stone ठीक अछि stone तळु ड्रॉप करा गला तो straight line आसिला so it distance will be equal to displacement okay so height केते कहैछि h is equal to displacement is equal to 45 meter लिख परिबे how long it takes to reach the ground देखो जतल तळु को आछि बॉडी छाड़ देले कोन हला सीधा तळु को आसिला तो एबे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लागेला मु सेतै बोली सेतल बुझैतली फ्री फॉल रो कांसेप्ट कोन यानी जतल ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग दैट इज फ्री फॉल एंड सेतल बॉडी रे जहा भी एक्सेलरेशन दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी so small g value actually होची देखंतु 9.8 amino meter per second square but we'll assume here to be 10 meter per second square for simplicity of calculation एग्जाम रे 9.8 नेबे 10 नै करिवे जहां आंसर बाहरियो तो अप्रोक्सीमेट पाखा पाखी विल बी द राइट आंसर ठीक अछि तो एठी देखंतु पचारछि हाउ लॉन्ग डज इट टेक सो टाइम पचारछि एंड वी नो एक्सेलरेशन सो देखंतु सो बॉडी केमते आछि तळु कवर कला सो आई कैन राइट s is equal to ut plus half at square what is it half at square ठीक अछि सो कोन होची सो योर फाइनल ओके सो फाइनल योर डिस्प्लेसमेंट केते आछि 45 मीटर देखंतु बॉडी ड्रॉप हा पूर्वरु इनिशियली को वेलोसिटी रे थिला रेस्ट रे थिला सो योर ut टर्म 0 ही जिवो ओके देन दिस इज हाफ इनटू पचरची this is your केते टाइम लागो छै हाउ लॉन्ग डज इट टेक ओके हाउ लॉन्ग सो दिस इज एक्सेलरेशन मली 10 इनटू दिस सो ये केते गला 90 तळे आसी गला 10
इज टी स्क्वायर ठीक अच्छे सो ये टी बाहर करी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 90/10 कटिगले केते आसला दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3 किंतु टाइम कौन के नेगेटिव हम कि नो देयरफॉर टी विल बी इक्वल टू 3 सेकंड्स बिकॉज टाइम इज नेवर नेगेटिव ठीक अच्छे टाइम कौन के पछुआ चले नहीं तो से टाइम इज नेवर नेगेटिव टाइम सब समय सब आगू चले ओके सो टी इज इक्वल टू 3 सेकंड्स सो नेक्स्ट जमती देखो ये a train increases its speed from 36 km per hour to 72 km per hour in 10 seconds find its acceleration ठीक अच्छे देखो इनिशियल वेलोसिटी ताहले मैं कौन धरी 36 km per hour फाइनल वेलोसिटी केते 72 km per hour टाइम केते 10 सेकंड एक्सेलरेशन टा मु बाहर करी ओके सो देखो ये टाइम एसआई यूनिट दिखाई सेकेंड्स स्पीड दिखाई वेलोसिटी दिखाई किलोमीटर पर आवर ताको आम कन्वर्ट करवा मीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करने कौन करवा सब बड़े कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड देन 36 किलोमीटर देन कौन करी आई विल मल्टीप्लाई 5/18 बट इफ आई वांट टू कन्वर्ट टू किलोमीटर पर आवर देन आई हैव टू मल्टीप्लाई 18/5 ओके ऑलराइट तो देखो 36 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड कले 5/18 18 हेले 2 केता हला 10 मीटर पर सेकेंड 72 किलोमीटर पर आवर दिखाई ओके एथरे 5/18 मल्टीप्लाई कली सो 18 4 जा 72 ओके सो दिस इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड ठीक अच्छे तो ये बाहर कर विल यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at ताले v केते कहई हमर 20 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्सेलरेशन वी हैव टू फाइंड आउट a इंटू टाइम केते 10 सेकेंड तो एपटू आसीगले 10 इज इक्वल टू a इंटू 10 तो 10 दीपटू कटिगले दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ओके क्लियर सो नेक्स्ट देखो A cyclist travels 60 meter east and then 60 meter west ठीक है ओके सो पचार हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ओके हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ठीक है टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट सो देखो साइक्लिस्ट ट्रेवल्स 60 मीटर ईस्ट सो ये गला हमारा डायरेक्शन ओके नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ठीक है साइक्लिस्ट ओरिजिन अच्छी 60 मीटर ईस्ट दिस इज 60 मीटर ईस्ट एंड देन 60 मीटर वेस्ट पुणी 60 मीटर वेस्ट को आसला ताने जो स्टार्ट करला से तो सही पहुँची गला ना ओ पोजिशन धर स्टार्ट कला 60 मीटर ईस्ट गला पुणी ओ पोजिशन का सी पहुँची गला इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर सेम ताले डिस्प्लेसमेंट केते ही जीवो जीरो ओके डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर सेम ओके सिंपल क्वेश्चन राजेश चेंज मारले तो चेंज मार पड़ेगा ओके सो नेटवर्क प्रॉब्लम तो जर टेक्निकल ग्लिच पे बोली क्लास टी समय रही जाइए सो हियर यू सी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखो दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आई एम नॉर्मली एक्सपेक्टिंग जे रीजनिंग असर्शन एंड रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन सो फार तो आसेनी बट आउ से पैटर्न नहीं जमी आसला सेमती पढ़ी जीवु देन क्लीयर हम नॉट लाइक दैट केत बहुत नुआ टाइप क्वेश्चन ही पचार दैट आई एम सेइंग ठीक पैटर्न भी धीरे धीरे चेंज करोची सो दैट यू कैनॉट प्रेडिक्ट ठीक समस्त गोटे यूनिफॉर्म माने प्लेग्राउंड रही बोली पैटर्न भी एव्री ईयर टिके हल्का चेंज आस सो गोटे रीजनिंग एंड असर्शन में क्वेश्चन देती ठीक है या केमी इंटरप्रेट कराए हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ताको डिस्कस करिया देखो ए वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यस ये है ट्रू सो ये है असर्शन आमर वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी ठीक अच्छे दिस इज द रीजन माने वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये है डेफिनेशन करेक्ट से कौन एथिपाई वेलोसिटी हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिकॉज वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी नथिंग लाइक दैट असर्शन एंड रीजन केमती पढ़े शुणु सब बड़े असर्शन स्टेटमेंट पढ़े एंड मझे गोटे वर्ड यूज करेंगे बिकॉज
बिकॉज ठीक अच्छे ये बिकॉज लगे कि रीजन पढ़े जदि देखिले ठीक आसছে आंसर देन बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए मीन्स रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन जदि नहीं इंडिविजुअली स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट बिकॉज लगे पढ़े से रीजन दौनी that means both A and R are individually correct and R is not the correct explanation of A. But इठी देखो velocity is the rate of change of displacement because velocity is a scalar quantity. First of all velocity is not a scalar quantity, it is a vector quantity. तो R इठी भूल हो गला. So R is false. ठीक है R is true जो लिखा है R actually कौन false. It should not be a scalar, it should be what? Velocity is a vector quantity. तो से R is true जो लिखा है मुझे काटिदेवी R is true लिखा है मुझे काटिदेली ठीक अच्छे बोथ A and R are true and R explains R पुणी true पुणी को काटिदेली ताले कौन हम A is true and R is false केवल इतने ही बचेगा ओके ऑलवेज फॉलो ऑप्शन एलिमिनेशन ठीक अच्छे जहाँ जहाँ पॉइंट्स में कहे माइंड रखु ठीक अच्छे एलिमिनेशन टेक्निक को फॉलो करो ओके रादर देन डायरेक्टली जंपिंग टू द आंसर एलिमिनेशन टेक्निक को फॉलो करो ठीक अच्छे ओके सो नेक्स्ट देखो a body can have constant speed but changing velocity ठीक है body can have constant speed okay but changing velocity because velocity changes when direction changes yes true velocity is a vector quantity ठीक है velocity जब vector quantity ताले मैं कौन कही परियो vector quantity means depends both on magnitude plus direction yes sir magnitude plus direction दीटा ऊपर डिपेंड करे ठीक अच्छे तो से बोली किंतु स्पीड इज व्हाट स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बॉडी धरतु गोटे सर्कुलर मोशन रे जाउछि गोटे बॉडी सर्कुलर मोशन रे अछि तो यार स्पीड इज कांस्टेंट धरतु ये गोटे कांस्टेंट स्पीड रे मूव करूछि ठीक है कांस्टेंट स्पीड रे मूव करूछि किंतु एट एवरी पॉइंट यू सी द डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज चेंजिंग ठीक है एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज चेंजिंग लाइक दिस ठीक है सो व्हेन एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज चेंजिंग दैट मीन्स द वेलोसिटी आल्सो चेंजेस ठीक है so I can say that the body can have constant speed but changing velocity true because velocity changes when direction changes yes okay both so what I can write that A and R are true ठीक है and R is the correct explanation of A okay and I can say that here R is the correct explanation of A okay ठीक है so next देखो okay fine so ठीक है फाइन सो आज आम कि एनालिसिस कले ओके मोशन रो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स गुड़ाक आज डिस्कस कले एंड देन ता कॉन्सेप्ट भी आम डिस्कस कर कॉन्सेप्ट सांगे सांगे आम क्वेश्चंस को सॉल्व कले को टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम रे आसुची एंड को भलिया आसीपारे ताकू आम डिस्कस कले खास करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो गुड़ाक पिलांकर असुविधा रहे स्टूडेंट्स मानकर कैंडिडेट्स मानकर प्रॉब्लम रहे ताकू को भले आम अप्रोच करवा ता विषय डिस्कस कले ग्राफ्स रू को भाया क्वेश्चन आम देखिले कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकली भी को भाया क्वेश्चन आम देखिले एंड सब जाक रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स आम डिस्कस कले सो व्हाट एवर वी हैव डिस्कस टुडे इन द क्लास इफ यू सिंपली एतिकी जदि रिवाइज करिवो ओके इजीली यू कैन स्कोर 4 to 6 मार्क्स इन मोशन बुझिपारे मोशन इन 1D चैप्टर जो 4 मार्क 6 मार्क आसुची इजीली यू कैन स्कोर 4 to 6 मार्क्स आ किछि भी न पढ़िले चलिवो ओके सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है so next time whenever we get some chance okay definitely we'll continue and discuss further okay thank you